Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari, Assistant Professor, Nirmala College, Ranchi. Today our topic of discussion is from IAC Second Year Mathematics and our topic is determinant, and in this chapter now we are going to discuss the application of determinant. So earlier in the previous lecture we have seen how can we solve the determinant and how can we find the solution for a determinant. And today we will see how can we use such a determinant to find the area of a triangle. So we all know that for area of a triangle we need three vertices, and three vertices we have two coordinate x and y coordinate. So if the 3 points are given, then with the help of that 3 points we can find the area of triangle. Okay, so if we have a triangle like this and the points are A, B and C respectively. Say these points are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. Fine. Then how can we find the area of this triangle? By using such determinant. So to find this area, we just use the formula del equals to half x1 bracket y2 minus y3 minus x2 y1 minus y3 plus x3 bracket y1 minus y2. Now you see from where this concept come from, this one. So if we have a triangle, then we can write in the determinant form like this: half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1. So whenever you have given the some point, then you just put a determinant and then put the value like x1 x2 x3 first, then whatever the value of the second coordinate is y1 y2 and y3, and thereafter you just write 1 1 1. Okay, so in this way you can solve this determinant and thereafter you can find the value of this triangle. Okay, but you must do the half of this area. Okay, so here we are going to next for the condition for collinearity. So collinearity means what? If all the points come in a line, then we say that the points are what? Collinear. So if there is a point, then it is not possible to find the area of triangle. That means at that moment, if the points are collinear, then all the points come in a line this way, A, then B, then C. So in this way we cannot find the area of triangle, and here the area of triangle will be equals to 0. So whenever you have to ask about the collinearity of the 3 points, then you just find in mind that when the points are collinear, then the area of triangle ABC, whatever the points are given, must be equals to 0. Okay, so here the area is half mob determinant sign x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 equals to 0. Okay, this one. And while solving this one, what we get? While taking the x1 here, what we get? Y2 minus y3. So I have put it here, y2 minus y3. Thereafter a minus sign. In the previous lecture, I told you whenever you just break the determinant, you just take the plus sign, thereafter the minus sign, thereafter the plus sign. So here I have put it the minus sign. So next is what? X2. So while taking the x2, here we are going to put this from. So y1 y3 1 and 1. While solving this equation, we get y1 minus y3, and next is again plus x3. So x3 we have, so we just cancel out this one. We have y1 minus y2, and this whole value becomes 0. Then we say that the points A, B and C are collinear. Okay, so let's see some problem from the collinearity. So here the question is, find the area of a triangle whose vertices are A minus 2 minus 3, B 3 2 and C minus 1 minus 8. Okay, so in your exams the points are given, you just have to find the area of triangle, and this question comes for the 4 marks. Okay, in this
Not the very short question answer. So for the 4 marks, this question will maybe ask in your exams. So the process for the solving this question is, we know that if A, B and C are vertices of a triangle, then the area of triangle is given by this one, this value. Okay, this is the formula. You all learned this formula. Okay, so you have triangle equal to half of this one. Fine. So here in this question, if A is this one, then minus x1 is minus 2 and y1 is what? Minus 3. If the point B is 3, 2, then we have x2, 3, y2, 2. If the point C is this one, then we have x3 minus 1, y3 equal to minus 8. Now, therefore, the area of triangle is equals to what? Half. Now, we put the values one by one here in this determinant. So, this is minus 2, 3 minus 1, minus 3, 2, minus 8. Thereafter, 1, 1 and 1. Now, we have to solve this question. So what I have told you, whenever we have to solve this question, then we just put the value here, and thereafter we want to make the row, either row or the column, elements of row or the column equals to 0. So here to solve this question, we want to make either these 2 points equals to 0 or either these two values equals to 0, so that we can expand the value and find the value easily. So here I am going to write like this. I am going to change R2 with R2 minus R1 and R3 with R3 minus R1. Since we have 1 in R1, 1 in R2, 1 in R3, so it is very easy for us to make any of the row value equals to 0. ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि कोई भी रो की वैल्यू को हम लोग 0 बना दें. हम R1 R2 को भी 0 बना सकते थे, हम R2 R3 को भी 0 बना सकते हैं, हम R3 R1 को भी 0 बना सकते हैं, बट आई चूज कि R2 को और R3 के वैल्यू को हम 0 बनाएंगे. तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है R2 और R3 को. अब सॉल्व करते हैं. तो R1 की वैल्यू को कुछ नहीं करना, R1 की वैल्यू को एज इट इज हमने रखा है -2, -3 एंड देन 1. अब R2 पे आते, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 से. तो R2 क्या है, 3 है, तो 3 माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ 2, मतलब कितने हो गए 5. तो हमने यहाँ लिखा 5. नेक्स्ट है 2, फिर क्या करनी है 2 माइनस ऑफ -3, फिर ये वैल्यू कितना देगा 5, फिर हमने लिखा यहाँ पे 5. अब ये लास्ट वाली आ गई 1, तो 1 माइनस 1 ये क्या दिया हमें 0, तो हमने लिखा यहाँ पे 0. तो इस तरह से R2 की वैल्यू हमें मिल गई. अब आते हैं हमारे वैल्यू को R3 के लिए. तो R3 का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, R3 के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ 1 minus of minus 2. That means what? Minus 1 plus 2. That means plus 1. I put it here plus 1. Next is minus 8 minus of minus 3. Fine. And this value will become what? Minus 8 plus 5. So this value become minus of, so minus of 3 is here. So minus of 5. So I put it here minus 5. Next is 1 minus 1. This one. So this value become 0. In this way, we just solve the determinant. Okay. Now we expand. So while expanding, what we get? Half is outside. Now bracketing. Minus 2 is taken. So the cofactor is what? This one. Because we just crossed this one. So we are living with only this value. So the cofactor is 5 minus 5, 0 and 0 plus. Next we put the minus sign now. So but minus, and we are going to the minus 3. So here we have minus 3. So minus of minus 3 is plus 3. So we put here the plus 3. Then again bracket. So cancel out this one. We are having 5, 1. Then 0 and 0. Okay, now plus. Next is what? Plus 1. So plus 1. So we just cancel out this one. We have 5, 1, 5 and then minus of 5. Now bracket close. Okay, I hope this is clear to you all. Okay, now proceed. So this is equals to what? Half. Now first one is 0 because all these two values are 0. So it becomes 0. Now next, these two values are 0. So become 0. Now plus 1. 5 into minus 5 is minus 25. And thereafter we have minus sign in between. So minus. And then 1 into 5 is 5. So we are having minus 30 divided by 2. And this is equals to what? Minus 15. So minus 15 is square unit. You must write the square unit because we are having area now. So we must write
square unit. So here the answer is minus 15. So but we are giving the answer, so write plus 15 square unit. Okay. So your answer is 15 square unit. Okay, girls? Okay, all? Okay. Now we come to the next question. So next question is, we just move to the next question. So next question is, find the value of k in order that the points 5, 5, k1, 10, 7 are collinear. तो ऐसा क्वेश्चन फिर 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि एरिया ट्रायंगल का क्या होगा, हमारा 0 होगा. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, मतलब वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हम लिखते हैं वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. दैट मीन्स उस पूरे इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और तब हमें के का वैल्यू मिल जाएगा. तो करते हैं सॉल्व. तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है द पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. इसलिए यहाँ पे देखो डबल इम्प्लाइज का साइन हम देंगे क्योंकि हमारे दोनों तरफ से होंगे. क्योंकि कोलिनियर है तो हमारा क्या होगा, एरिया 0 हो जाएगा. और अगर एरिया 0 होगा मतलब क्या होगा, कोलिनियर होगा. इसलिए हम यहाँ पे दे रहे इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज का साइन. तो हमने डिटर्मिनेंट लिखा और देखो हमने हाफ यहाँ नहीं रखा क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाफ लिखे तो भी ये क्या इक्वल टू 0 है ना, तो ये हाफ सीधा चला जाएगा तो बन जाएगा क्या, 0. इसलिए हमने यहाँ पे हाफ को नहीं रखा. ठीक है. तो दिस वन इक्वल्स टू 0. 5, 5, 1, k1, 1, 10, 7, 1. तो यहाँ से देखो ये है x1, ये है x2, ये है x3. ठीक है. ये बन गया 5y1, then y2, then this one is your y3. You put this value, then 1, 1, 1 equals to 0. ठीक है. अब आते हैं सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने का देखो फिर वही है फंडा हमारा कि R2 को हम या 0 बना दे या R3 को 0 बना दे. जब भी 1, 1, 1 कहीं भी दिखे ना, आपने क्या करना है, पहले उसको 0 बनाना है. अगर आप उसको 0 बना देते तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको एक्सपैंड करना और एक्सपैंड करके उसका रिजल्ट देना. ठीक है. तो जब भी हमें लगे कि हाँ हम किसी भी रो या कॉलम को 0 बना सकते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ हम फिर चूज कर रहे हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे वैल्यू लिखेंगे. तो फर्स्ट रो के वैल्यू को एज इट इज रख लेते हैं पहले क्योंकि उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे. तो 5, 5, 1. फिर क्या आ गया, देखो R2 है ना, तो R2 के लिए वैल्यू चेंज करें तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5. यहाँ से देखो k माइनस 5, k माइनस 5 लिखा. 1 माइनस 5 माइनस 4, 1 माइनस 1 0 लिख लिया. अब आते हैं R3 पे. तो R3 क्या है, R3 माइनस R1. ठीक है. तो R3 क्या है, फिर 10 है हमारा तो 10 लेते हैं. तो 10 माइनस k, सॉरी 10 माइनस R1 है ना, तो क्या हो जाएगी 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 5, 2, 1 माइनस 1 0. आ गया हमारा सोल्यूशन. अब इस डिटरमिनेंट को हम पूरा तोड़ेंगे. तो डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए क्या बनाया था, कोफैक्टर करके बनाया है. या तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट करके लिखो, ब्रैकेट करके नहीं लिख सकते तो कोफैक्टर के फॉर्म में लिखिए. ठीक है. सॉरी नॉट द कोफैक्टर, इसको हम लोग लिखेंगे आपके स्मॉल फॉर्म में जो लिखते हैं. तो यहाँ पे हमारा आ गया है ये 5. फिर आप लिख रहा हमने क्या, -4, 2, 0, 0, फिर -5. फिर क्या आ गया, k माइनस 5, 5, 0, 0. फिर आ गया +1. यहाँ हमें लिख दिया है k माइनस 5, 5, -4 एंड देन 2 इक्वल्स टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, जैसे हम सॉल्व करेंगे पहला हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, दूसरा वैल्यू भी जाएगा 0, तीसरे ब्रैकेट से हमें क्या मिल रहा है 2 टाइम्स k माइनस 5 एंड देन +20. सिंस देयर इज अ माइनस साइन सो माइनस माइनस अगेन बिकम प्लस. सो +20 इक्वल्स टू 0 और ये हमें देगा 2k माइनस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई 2k इक्वल्स टू व्हाट, -10 and this imply k equal to -5. So k equal to -5 is the required solution. And here in this way we can find the value of k whenever we have given and 3 points are collinear. Okay. I hope you all understand it very well. If having any doubt then give me a comment or ask me in my WhatsApp number or give me a comment in my YouTube channel. Thank you all.